नमस्कार बंधुगण, स्वागत समस्त गोटे नुआ भिडियो। तो जमती कि मु कही आपण को जे योगी बामन यूनिवर्सिटी जो एग्जाम टी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम प्रथम हवा जाऊँ आंध्र प्रदेश रे। तो से एग्जाम रे 3टी वर्षर क्वेश्चन पेपर रु 90% प्लस क्वेश्चन आसे बोली कही। तो सही ता भीतर आज 2019 क्वेश्चन पेपर टा डिस्कस करनवा, राइट, जोटा कि 2024 एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट। 2019 रे को क्वेश्चन सब आसता ताउडे देखि नवा। ये होची प्रथम पेपर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट। देखिबा आपनकर एठी दुईटा 80 मार्क रहिबो और दुईटा 40 मार्क पेपर रहिबो। जो 80 मार्क पेपर प्रथमे 5 मार्किया 10टा क्वेश्चन। ओके, एक नंबर देखिबा, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन and or देछि explain the scope of sociology with suitable examples। sociology रो scope और sociology education रो संपर्क। 2 नंबर अछि socialization is a continuous process, example सहित explain करंतु। और रे अछि explain the agencies of socialization, socialization रो अलग अलग एजेंसी ऊपर आलोचना करंतु। क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा, what are the characteristics of culture, right। एवं और देजी व्हाट इज मीन्ड बाय कल्चरल लैग ऊपर डिटेल लेखो। 4 नंबर देछि राइट द इंपैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। तार और देइतला लिस्ट आउट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कल्चर, संस्कृतिर विभिन्न दिग ऊपर आलोकपात कर जोटा हम कहूँ। परवर्ती 5 नंबर क्वेश्चन देइथिला write a critical note on social satisfaction in India, right। social satisfaction in India ऊपर एक छोटो नोट लेखो। तार और रहथिला explain about social mobility कौन ताको आलोचना करो। क्वेश्चन नंबर 6 रे पचारथिला list out the constraints of social change in India। तार और रे पचारथिला write the role of education in modernization, आधुनिकता रे शिक्षार महत्व कौन ताहा आलोचना करो। 7 नंबर जस्टिफाई स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, राइट। स्कूल एक सोशलाइजेशन एजेंट ताको जस्टिफाई करो। और देथिला व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी रा बेसिक प्रिंसिपल्स ऊपर आलोचना करो। 8 नंबर रे राइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। और देथिला व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी इन एजुकेशन। देन 9 नंबर रे हाउ कैन वी प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। और जातीय संहति कौन बा व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, राइट द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जातीय संहति पर आलोचना करो। 10 नंबर रे बा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शेष देइथिला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल क्राइसिस आर देयर, केते प्रकार सोशल क्राइसिस अछि। सजेस्ट फ्यू एक्टिविटीज फॉर ए पीस क्लब इन ए सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल रे पीस क्लब पाई किछि एक्टिविटीज लेखु। देन देखिबा लॉन्ग टाइप ग्रुप बी रे पार्ट बी रे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन थिला डिस्कस ब्रीफली द बैरियर्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, जातीय संहति पई बैरियर प्रतिबंधक सब कोन। सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्कूल्स। और रहथिला व्हाट आर द एक्शंस टेकन फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, समस्त को शिक्षा ऊपर समान सुविधा मिलू ता ऊपर कौन एक्शन दरकार ताको लेखो। 12 नंबर रे देथिला एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इन चिल्ड्रन, इलुस्ट्रेट योर आंसर विथ सुइटेबल एग्जांपल्स, वर्णना करिया पई देछि, एटा वर्णना करिया पड़िबो। और रे देथिला राइट ए क्रिटिकल एसे on impact of social networking on present generation with suitable illustrations। आजिका समय रे सामाजिक गणमाध्यम फेसबुक इंस्टाग्राम भली यूट्यूब भली केमिति जनरेशन ऊपर प्रभाव पकड़ता रचना लेख बल बहुत जिनस निज मन रू भाविक लेखिया सब्जेक्टिव। ये थिला हमर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन रे। ओके, तापर आसीबा 2 नंबर टॉपिक थिला लर्निंग एंड टीचिंग। ये मध्य 80 मार्क रो 100 मार्क क्वेश्चन, 80 थ्योरी दबा 100 मार्क पेपर। 10टा शॉर्ट टाइप। 1 नंबर थिला एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, को फैक्टर लर्निंग इन्फ्लुएंस करे। और थिला
how will you develop concept formation among learners. 2 नंबर थिला explain about types of memory प्रकार ऊपर आलोचना करो. और थिला what do you mean by forgetting and state reasons for forgetting. भूलिबा कोन तार कारण ऊपर सब लेख. 3 नंबर थिला state the implications of trial and error theory. ट्रायल एंड एरर थ्योरी रो इम्प्लिकेशन कोट कोट व्यवहार आइतला क्लासरूम रे तापर आलोचना करो. तार और थिला राइट ब्रीफली अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग. बहुत इंपोर्टेंट निहाती पड़िता सब कोठी भी आसीबो राइट. 4 नंबर थिला व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर कर जो थ्योरी ऊपर पचारछि. तार और थिला राइट अबाउट द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज इन क्लासरूम लर्निंग. क्लासरूम लर्निंग रे बिहेवियर पर्सपेक्टिव रो थ्योरी ऊपर आलोचना कर. 5 नंबर थिला टे क्लैरिटी कम अछि. 5 नंबर थिला एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कांसेप्ट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग. तार और थिला स्टेट ब्रीफली द बर्नर लर्निंग थ्योरी. बर्नर को लर्निंग थ्योरी एंड आल्सो स्टेट द इम्प्लिकेशंस इन क्लासरूम तक केमती इम्प्लीमेंट करा जाय ता ऊपर आलोचना कर. 6 नंबर थिला एक्सप्लेन अबाउट पैजेट्स डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग. जॉन पैजेट करो डेवलपमेंट थ्योरी पर आलोचना करो. और थिला व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग ता ऊपर लिखिबा पड़िबो. 7 नंबर थिला एक्सप्लेन द रीजन फॉर ट्रीटिंग टीचिंग एज प्रोफेशन. काहे कि टीचिंग एटाकू टीचिंग प्रोफेशन को केमती भलो तार केमती ट्रीट करा जाय ता पर लिखिबा देछि रीजन गुडा को. और देछि एक्सप्लेन द कांसेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड इट्स इंपोर्टेंस इन टीचिंग प्रोसेस. इंस्ट्रक्शन कोन तार कांसेप्ट कोन टीचिंग प्रोसेस तार इंपोर्टेंस कोन ताहा लिखिबा पड़िबो. 8 नंबर देछि एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एज ए नेगोशिएटर. ता और देछि स्टेट द फंक्शंस ऑफ ए टीचर इन क्लासरूम. प्रोफेशनल कैरियर ऊपर टीचर को एक प्रश्न. 9 नंबर रे व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट. ओके शिक्षण परिवेश और शिक्षण जोटा एंगेजमेंट ता ऊपर डिटेल लिखो. हाउ और थिला हाउ कैन यू क्रिएट ए इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट. इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट केमती क्रिएट करिबा. 10 नंबर थिला हाउ विल यू क्रिएट कल्चरल कंग्रुइटी बिटवीन होम एंड स्कूल. और थिला सजेस्ट सम ऑफ द टेक्निक्स टू एनहांस मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द लर्नर्स. पार्ट बी रे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपन कर देथिला हाउ ए लर्निंग प्रोसेस कैन टेक प्लेस. एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस. कौन सी भी जॉन पैजेट रो स्किनर कर कहार भी दिता लर्निंग प्रोसेस को आपन आलोचना करि परिबे. और थिला डिस्कस अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग थ्योरीज इन टर्म्स ऑफ देयर मेरिट्स एंड एप्लीकेबिलिटी टू द क्लासरूम लर्निंग. सही टाइप रे टिके बुलिक प्रश्न पचारछि डिटेल आपन को लॉन्ग टाइप लिखिबा. 12 नंबर थिला स्टेट द फंक्शंस इन डिटेल अबाउट टीचर इन क्लासरूम स्कूल एंड कम्युनिटी. क्लासरूम भीतर स्कूल रे और कम्युनिटी रे टीचर रो फंक्शन कोन ता ऊपर लिखो. और थिला एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर इन द एजुकेटिव प्रोसेस. शिक्षिका व्यवस्था रे शिक्षण व्यवस्था रे कल्चर रो कोन मूल्य रहिछि. ना पेपर 3 हमर थिला जोटा कि हम कहछे क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च. 50 मार्क रो पेपर 40 मार्क रो थ्योरी लिखिया पड़िबो. 5 रो शॉर्ट टाइप और गोटी लॉन्ग टाइप. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कोन थिला एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन. और थिला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ई क्लासरूम. 2 नंबर रे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट. और थिला एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. 3 थिला हाउ डू यू कंसीडर टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. और थिला हाउ डज टीम वर्क एंश्योर्स कंडक्टिव एनवायरनमेंट इन स्कूल. 4 नंबर थिला व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन मैनेजिंग क्लासरूम डायनामिक्स. और रे थिला राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. 5 नंबर थिला एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नीड ऑफ एक्शन रिसर्च. और थिला राइट द स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च स्टेप्स. 5 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप रे दुईटा क्वेश्चन गोटे करिया पड़िबो. और रहितबो 15 मार्किया एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजीज टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज. और थिला एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम मैनेजमेंट. बढ़िया क्वेश्चन. ओके एंड शेष पेपर जोटा कि हमर थिला आर्ट एजुकेशन जोटा कि पेपर 50 मार्क रो 40 मार्क रो थ्योरी देवा पड़िबो. 5टा शॉर्ट टाइप थिला कोन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डिफाइन एंड टर्म एस्थेटिक्स. जोटा आमे तांको कहूचे ना एस्थेटिक्स बोली कहूचे. ओके तांको ऊपर
ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆର୍ଟ ବି ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଆଥଲେଟିକ୍ସ। ଓକେ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ବୋଲି ତାର ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାର ଭଲରେ ପଢିଥିବେ। ଅବଶ୍ୟ ୟୋଗୀ ବାମନ ଏତେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେନି, ନାଗାର୍ଜୁନ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଉ ଆର୍ଟ ଇଜ ଏ ମିଡିୟମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, और ଥିଲା explain the relationship of art and society। 3 नंबर ଥିଲା state in detail different forms of performing art and write its important in education। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ performing art ଆମର କିଛି ଅଛି ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ଶିକ୍ଷାରେ କେମିତି, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। how can a local art forms integrated to teaching and learning। 4 नंबर क्वेश्चन ଥିଲା explain the contributions made by A.K. Kumarasamy to the field of art and education। और ଥିଲା what are the contributions of western thinkers towards art and education। जो ମାନଙ୍କର थिंकिंग ऊपर ଦେଇଛି ସେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁମାରସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। 5 ନମ୍ବର what is craft work, how craft work is useful to the learners। और ଅଛି explain the concept and importance SUPW। SUPW ର concept ଆଉ importance ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ସିମ୍ପଲ ଦୁଇଟା क्वेश्चन ଆସିଥିଲା। explain in detail about ରସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। जो आम नव रस 10 रस आम संस्कृत साहित्य पढ़ीचे, विभिन्न प्रकार रस थाए ऑफ इंडियन आर्ट, हाउ इट इज यूजफुल टू लर्नर। देखिए ना आमर थी विभिन्न रस, प्रेम रस, विभत्स रस, राइट, विरह रस, एमती 10 रस नवरस अच्छी, कई 10 रस कहती जो मैंने ओडिया साहित्य कि संस्कृत साहित्य पढ़ी से जानी ता उपर आलोचना। देन राइट इन डिटेल अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन मेन फेस्टिवल and its significance in the field of education। एटा आसे, राइट, इवन मोर मन अच्छी बहुत वर्ष तले बीडी कला बेले एभला क्वेश्चन मोर ओटा आस्तला, राइट। भारत रे पालित होता विभिन्न प्रकार पर्वपर्वणी पर डिटेल तार काहेकि पालन होछि, तार बेनिफिट कोन, एजुकेशन तो कोन संपर्क, या ऊपर आलोचना करो। तमे होली, दशहरा, दोल A to Z सब स्टेट रो लिखि परिबो जति कि जानिछ, बढ़िया हबो। आ 10 पेज भी लिखि हबो। तो एई भला सब क्वेश्चन हमकु आस्तिला केबे 2019 मसिया रे योगी वामन यूनिवर्सिटी। तो ये सब क्वेश्चंस वीडियो देखला पारे पाई जिवो, ताकू भलो भाବରେ थरे प्रिपेयर हुओ। यादर बहुत क्वेश्चन आसीबार अछि। आ दुईटा इयर रो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिबा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।